Okay, good morning to everyone. We have to talk again structures which are present inside of the bacterial cell wall. And yesterday we have talked cell membrane, cytoplasmic membrane, which is present inside of the cell wall and surrounds whole cytoplasm that that have action or that have functions relative permeability, selective permeability, and second was digestion or breakdown of nutrients and production of energy. And today we have to talk again structures within the bacterial cell. If you will see out here, suppose this is all inside of the bacterial cell. Cell wall of this has been studied. Cytoplasmic membrane of this bacterial structure has been studied. Capsule has been studied. Flagella has been studied. Villi has been studied. Now we are inside in cytoplasmic region of the bacterium. If you will see in cytoplasmic region of the bacterium, you will find these small structures are present. This is chromosome or DNA. These small are ribosome. Cell wall is outside, cell membrane is also here, and the plasma. These are some renowned and prominent structures. One is nuclear material, another is plasmid and ribosomes. These are some prominent structures which are present inside of the bacterial cell, in cytoplasmic region of bacterial cell. The most macromolecule is DNA or chromosome. Another is plasmid and ribosome, and the remaining is liquid over here. Cytoplasm is thick aqueous semi-transparent solution. It contains 80% water. Cytoplasm is thick aqueous semi-transparent solution and it contains 80% water. It contains organic molecules and inorganic ions. It contains protein, it contains carbohydrates and lipids. These all things are present in cytoplasmic region. 80% is water and the remaining is organic molecules, inorganic molecules, proteins, carbohydrates and lipids. These are all in a solution form that is called the cytoplasmic region, cytoplasm. And appearance is semi-transparent. Its appearance is semi-transparent. It contains 80% water. It contains organic molecules. It contains inorganic molecules. It contains the carbohydrates, proteins, and lipids. So this cytoplasm contains all these things. And the prominent structures which are present in cytoplasmic region are nuclei, ribosomes, inclusion bodies. These are some prominent structures. Major structures in cytoplasm are nuclei, means DNA, ribosome, a small structure responsible for protein factories, and inclusion bodies which are called granules. These are prominent structures which can be seen and which can be studied in detail.
So this is cytoplasmic content. Because in microbial bacterial anatomy and physiology, we have to study the structures which are present in bacterial cells. All structures which are present in bacterial cells. And we have started from most outer side. Most outer side was capsule, outer membrane, cell wall, flagella, pyre, and after that we entered inside of the cell wall that contains cytoplasm, means a liquid which is thick and semi-transparent solution that contains 80% water. It also have organic molecules. It also have inorganic molecules. It also have protein, carbohydrates, and lipids. And the major structures which can be seen over here, these are DNA, ribosomes, and granules. These are all structures are present in cytoplasm of the bacterial cell. और सेम टाइम आप ड्रॉ भी करें इस स्ट्रक्चर को साइटोप्लाज्म रीजन में प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर आपको क्या क्या नजर आ रहे हैं यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम प्लीज हम कोई मुश्किल और अजनबी बात नहीं कर रहे हैं हम सीधी सी एक सिंपल बात कर रहे हैं कि साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीजें मौजूद हैं और साइटोप्लाज्म किसका बैक्टीरियल सेल का दैट इज प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक नहीं है इट कंटेन्स ऑल दीज थिंग्स Nuclei or DNA is present in nuclear region that contains DNA. Ribosomes are present, which are responsible to synthesize production of protein, responsible for production of protein. And inclusion bodies. These are reserved deposits of energy. अब ये तीन मेजर चीजें आपको इसमें नजर आ रही हैं. Nuclei which is present in nuclear region and contains DNA. And we know about DNA a little bit that it is inheritary material which is responsible to carry the all structures and functions of bacterial cell. न्यूक्लियर मटेरियल में जो डीएनए मौजूद है इसकी जिम्मेदारी ये है कि जितने भी उसके ऑर्गन्स हैं स्ट्रक्चर्स हैं फंक्शंस हैं उस सब को मेंटेन या कैरी ऑन जो मटेरियल कर रहा है वो कौन है दैट इज डीएनए राइबोसोम जो मौजूद है साइटोप्लाज्मिक रीजन में जो प्रोटीन बनाने का काम करते हैं और कुछ ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं जिन्हें इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं दीज आर रिजर्व डिपॉजिट्स ऑफ एनर्जी जिनके अंदर एनर्जी मौजूद होती है और एनर्जी बैक्टीरियल सेल अपने डिफरेंट फंक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं Nuclear material, if you will see in bacterial cells,
Nuclear material is single, long, double-stranded, circular DNA. Nuclear material जो है that is single, long, double-stranded, circular DNA. DNA means deoxyribonucleic acid, and this is called bacterial chromosome. If we will see this, if we want to try to see this nuclear material through electron microscope, we will find it like this. Suppose this is bacterial cytoplasm, and in bacterial cytoplasm there is a little bit thick region compared to another cytoplasm that has been designated to. It is nuclear region or DNA region which contains the DNA. And the DNA is single, long, double-stranded circular DNA, and it is called bacterial chromosome. The function of DNA carry all genetic information required for cell structure and function. तो अब DNA किस तरह का है? DNA के मतलब ये बता रहे हैं, it is a single thread, धागानुमा एक structure, long, have length, लेकिन double stranded, it is single, long, but double stranded. It is long, double stranded, circular DNA. जैसे अगर हमने किसी एक धागे को, दो धागे हमने आपस में लिए और उनको पहले जो है ना सही तरीके से थ्रेड फॉर्म में बना दिया, उनको आपस में लपेट लिया, जैसे आपने रोप देखी होगी, रस्सी आपने देखी होगी, उस हिसाब से डीएनए मौजूद है. बट इट इज सिंगल, इट इज लॉन्ग, it is double-stranded circular DNA that is called bacterial chromosome. And the function of this chromosome or DNA is to carry all genetic information. जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं बैक्टीरियल सेल की या सेल की या ऑर्गेनिज्म की, वो सारी इंफॉर्मेशन कहां पर मौजूद है? डीएनए के अंदर मौजूद है. एंड दिस इज रिस्पांसिबल टू कंट्रोल द ऑल फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, जिसके वजह से बकरी आज तक बकरी है, इंसान आज तक इंसान है, और उसको कंट्रोल करने के लिए जो चीज रिस्पांसिबल है वो डीएनए. Carries all genetic information. बोल नहीं दिया. हाँ लगाओ. डालिंग का कोई स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. ठीक है, यहां तक बात क्लियर है. और प्लाज्मिड की बात कर रहे हैं. व्हाट इज प्लाज्मिड? If you will see plasmid,
Plasmid is extra chromosomal structure in cytoplasm of the bacterial cell. What is plasmid? Plasmid is extra chromosomal DNA. सपोज ये डीएनए मौजूद है तो उसके साथ एक इजाफी जो है ना छोटा सा सैटेलाइट डीएनए मौजूद है उसके अंदर, that is extra chromosomal DNA, small circular double stranded DNA not connected to bacteria. ये एक इजाफी मॉलिक्यूल है. If you will see the electron micrograph of this plasmid, it is like this, and here it is a satellite DNA. Extra एक DNA मौजूद होती है, जेनेटिक स्ट्रक्चर और फंक्शन, सेलुलर स्ट्रक्चर फंक्शन को कंट्रोल करना वो ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन उसके साथ पैरेलल एक और छोटा सा डीएनए मौजूद है, उसको हम प्लाज्मिड कहते हैं. दैट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, स्मॉल, same structure, is circular double stranded DNA not connected to bacteria. Bacteria के साथ कहीं अटैच फॉर्म में नहीं है. Chromosome replicates independently और it also has ability to replicate itself. अपनी कापी खुद बना सकता है, इसके अंदर ये सलाहियत मौजूद है. लेकिन एक और प्रॉपर्टी भी है, it may be gained, ये कहीं से एक्वायर भी कर सकते हैं ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, और में लॉस या किसी को ट्रांसफर भी कर सकते हैं. जिसमें हमने कंजुगेशन और सेक्स पाइली का जो फंक्शन हमने पढ़ा था, उसमें यही एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जिसे हमने प्लाज्मिड कहा है, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर बैक्टीरियल सेल थ्रू कंजुगेशन और थ्रू पाइली. एंड देयर अगर ये किसी बैक्टीरिया में आ जाए या इससे लॉस हो जाए, उससे बैक्टीरियल सेल को कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी उसकी जिंदगी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कैरेक्टर कैन बी लॉस्ट. इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा. प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए present in cytoplasmic region of the bacterial cell, and it is a small circular double stranded DNA. It can be gained or it can be lost by bacterial cell. This connection is unstable.
ठीक है, यहाँ से बता देते हैं, अगर वहाँ काम नहीं कर रहा तो जस्ट वी हैव टू फिनिश दिस थिंग। कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर बैक्टीरियल सेल। और ये जितनी भी टेक्निक्स बायोलॉजी में है, जिसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, इन सब में यही प्लाज्मिड का काम किया जाता है कि एक बैक्टीरियल सेल के अंदर सपोज वन बैक्टीरियल सेल हैव plasmid, and that plasmid have ability to produce some important compound that can be transferred into some desired bacterial cell. सपोज एक बैक्टीरिया के अंदर एक प्लाज्मिड मौजूद है, उसके कुछ यूनिक फंक्शंस हैं। सपोज वो एंजाइम जो प्रोड्यूस कर रहा है, वहीं वो कोई इंपॉर्टेंट मेटाबोलाइट प्रोड्यूस कर रहा है। आप चाहते हैं कि यार यही मेटाबोलाइट इस क्रॉप में भी ट्रांसफर हो, तो आप इस प्लाज्मिड को इस बैक्टीरियल सेल से किसी तरीके से थ्रू कंजुगेशन या थ्रू एनी अदर टेक्निक वी आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर बैक्टीरियल सेल। और उसके अंदर प्लाज्मिड कंटेन 5 to 100 जीन्स। प्लाज्मिड के अंदर कितनी जीन्स मौजूद होती है? तकरीबन 5 से लेकर 100 तक जीन्स मौजूद होती है। और जीन को डिफाइन आप किस तरह करते हैं? हाउ वी कैन डिफाइन द जीन? small part of DNA which is responsible to control any specific characteristic or function, उसको हम जीन कहते हैं। तो इसके अंदर प्लाज्मिड के अंदर 5 से लेकर 100 तक तकरीबन जीन्स मौजूद होती हैं। और उसमें मोस्टली कौन कौन सी जीन्स मौजूद हैं? सपोज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स इसमें मौजूद होती है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है? सपोज एक एंटीबायोटिक हम मुसलसल एग्रेसिव फॉर्म में पेशेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं, और बैक्टीरिया का बहुत लॉन्ग एक्सपोजर है उस एंटीबायोटिक से, या लोग जो है ना उसको एंटीबायोटिक देकर उस बैक्टीरियल सेल को मार रहे हैं, ठीक है। सो बैक्टीरियल सेल रियलाइज कि मुझे ये लोग हमेशा इस चीज से मारते हैं, सो आई हैव टू इनकाउंटर दिस, कि ये लोग जिस चीज से मार रहे हैं, या तो मैं उस चीज को तोड़ूं, या ये लोग जिस एंटीबायोटिक से मेरी जिस जगह को ब्रेक कर रहे हैं, जिस जगह को तोड़ रहे हैं, उस जगह को चेंज कर। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मैकेनिज्म बैक्टीरियल सेल्स में जो मौजूद है, दैट इज ड्यू टू प्लाज्मिड। टॉलरेंस टू टॉक्सिक मेटल्स। Tolerance to toxic metals make bacterial cell able to survive in toxic metal concentration. किसी जगह में सपोज टॉक्सिक मेटल मौजूद है, टॉक्सिक मटेरियल किसी जगह में सपोज मौजूद है, तो वहां बैक्टीरियल सेल को जो इस काबिल बनाता है कि दे विल सर्वाइव अवर देयर, दैट इज ड्यू टू प्लाज्मिड। टॉलरेंस टू टॉक्सिक मेटल्स, बर्दाश्त पैदा करता है बैक्टीरियल सेल्स को किसी भी टॉक्सिक मटेरियल में रहने के लिए। प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन, एंड द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम, ये सारे फंक्शन प्लाज्मिड के। प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन and the synthesis of enzyme। अब सपोज कोई एंजाइम हमें चाहिए इंसुलिन का, जैसे पहले इंसुलिन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हुआ करती थी, अब बहुत ज्यादा चीप है। क्या किया है वो बैक्टीरिया, जो वो जीन जो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही थी, वो जीन निकालकर बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर किए, और बैक्टीरिया 24 आवर्स के अंदर आप उसकी एक बहुत बड़ी तादाद, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ग्रो कर सकते हैं, और उस दौरान वो अपने सेल्स से इंसुलिन भी रिलीज करते हैं, जिसको आप बाद में प्यूरिफाई करके पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं, पेशेंट को इंजेक्ट कर लेते हैं। So these all properties are present in। ठीक है, इसने बहुत ज्यादा तंग किया, अब हम प्रैक्टिकल को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं।